Hello, I'm Zawar Saleemi. I'm working for Munich Re in Munich, Germany. I've been here for about 2 years now, and Munich Re is one of the biggest reinsurance companies in the world. Reinsurance is insurance for insurance. So I'm working as an actuary. I've been here for about 2 years now. Before moving here, I was working for KPMG in London. I was working there for about 7 years, and that's where I qualified as an actuary. I did my bachelor's before that at LSE, so that's London School of Economics. So an actuary is making sense of future, making financial sense of future. So if I compare to accountants, for example, accountants are looking at past events, historic events. So for example, they tell you how much profit a company has made, for example. Whereas what actuaries are doing is that they're looking at the future. So we're basically working with probabilities and try to understand and estimate what could happen in the future. So traditionally, actuaries have been working in 4 main areas. Those are investments, pensions, life insurance, and non-life. So I'm working with Munich Re, as I mentioned before, in Munich. I'm concentrating in the life insurance space. But these days you see actuaries working in all kind of fields like online gaming, pharmas, and so on. So the actuarial profession is obviously a very mathematical one. So one needs to be comfortable with numbers. It's important to have some maths or stats background, I would say. It's also important to have some problem solving and analytical skills. So you should be able to look at like different scenarios and why things behave the way they do, I would say. And like any other profession, communications is super important. So there's no point of coming up with a magic number if you cannot explain that number or how you came up with that number to other people. And lastly, I would say it's very important to keep a positive attitude. And you need that not just in your education but also while working, because sometimes things don't happen as planned. So it's very important to have a calm mind and keep on carrying on. I would say find out more about the profession, definitely do your research, speak to as many people as you can. In terms of studying, maths and stats are 2 very useful subjects. They are good entry points into this profession. The profession also requires a lot of hard work. People doing the exams would know that the exams can be really tough. Pass rates can be very low, sometimes as low as 15%. It can also be very challenging to work and study at the same time. So yeah, you have to give your hard work, and you just have to remember that actuaries have gone through this, so we all have done this, and this is actually what makes actuaries so valuable. Yeah, I think mentorship is very very important. अगर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचूं तो मुझे याद है जब मैं A levels में था, मुझे इस प्रोफेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और इनफैक्ट मुझे याद है मैं एक दिन अखबार पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि हमारे प्रेसिडेंट साहब के बेटे जो हैं वो ये प्रोफेशन कर रहे हैं। तो मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई और फिर मैंने थोड़ी इस पर रिसर्च की। और मेरे एक टीचर थे, उन्होंने इस प्रोफेशन के बारे में सुना हुआ था, तो उन्होंने मेरी काफ़ी गाइडेंस की, काफ़ी उन्होंने मुझे बताया इस प्रोफेशन के बारे में। मुझे पता चला कि तब पाकिस्तान में सिर्फ तकरीबन 25 के करीब एक्चुअरीज थे। तो आई विश के उस वक्त जो है मैं उनमें से किसी को जानता या मैं किसी और एक्चुअरी से उस वक्त बात कर सकता। तो अगर वो उनकी गाइडेंस होती तो आई थिंक मेरी प्रोफेशनल जर्नी ज़्यादा ईजी होती। लाइक मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी, काफ़ी चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं चल सका जो आई विश के मुझे पता होता। और अगर मैं एजुकेशन के बाद प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में भी सोचूं तो आई थिंक अगेन गाइडेंस और मेंटरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कोई होना चाहिए जो आपको बता सके इनफॉर्मल सेटिंग में कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आई थिंक आपकी करियर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो या आई वाज लकी कि मैं जैसे अपनी करियर का आगाज़ मैंने KPMG में किया, और इवन अभी मेरे कहीं में हमारे जो है ऐसे मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे
हम जैसे जो नए जॉइनर्स होते हैं उनको मेंटर्स के साथ असाइन करते हैं। और अभी जैसे मैं अपनी कंपनी में मैं कुछ बच्चों के लिए मैं मेंटर का रोल अदा कर रहा हूँ, तो या सुपर इम्पोर्टेंट।